Yes, my dear students, chapter number 4, measures of dispersion. And in this e-class, today we will be doing some practical part also. So, before that, a little bit of theory 1, measures of dispersion, as I said. We shall study the following absolute and relative measures of dispersion. You all know about it, about the absolute and relative measures of dispersion. So, which are we going to study in this chapter? First range, then second is quartile deviation, third mean deviation, and fourth is standard deviation. Now, from the above measures, range and quartile deviation are known as positional measures of dispersion, as these measures depend on positions of observations of the data arranged in increasing order of their magnitudes. Yes, over here, uh, it is to be arranged in increasing order of the magnitude, and yes, if especially when the sum is of classes 1 or XI, especially. If not, then we need to take care while doing the calculations. And in quartile deviation, students, you should know how to calculate the different quartiles, that is especially Q1 and Q3, and you all know that Q1 and Q3 are known as positional averages. So, and as we are studying dispersion over here, and it is deviation word used over here, quartile deviation, so it is positional measures of dispersion. Now we move on to the next two, that is mean deviation and standard deviation, are known as measures of dispersion representing the summary of deviations of observations from the measure of central tendency. Yes, इन इसमें मीन यूज होता है, इनमें कैलकुलेशन मीन चाहिए होता है मीन डेविएशन में. So yes, summary of deviations, this is what, when we will be doing the practical part, at that time it will be easier for you people to understand. And till that time, I think it is quite clear that basically 4 we are going to study, and a little bit of description is given to you people in this slide. Now next time move on to our today's topic, that is range. Now range we have already started, but once again, with one more additional topic in range we will be studying. This says that the difference between the highest and the lowest observation of the data is called range, and it is denoted by the symbol R. Over here the R is capital. Yes, range formula you all know, XH minus XL. XH is the highest observation, whereas XL is the lowest observation. Now range, that is denoted by capital R, is an absolute measure of dispersion having same unit of measurement as that of the observations. Yes, अगर क्वेश्चन में आप लोगों को सेंटीमीटर्स दिया हुआ है तो आपका आंसर भी सेंटीमीटर्स में ही आएगा. Now students, next I move on to the explanation part of it in short. Over here you can see the graph is made, and this is related to share price of a company. Over here it is given to us in detail the data of weekly closing share prices of a company for 8 weeks are given. Yes, 8 weeks, 1 2 3 4 5 6 7 8. On x-axis you find the 8 weeks, and the share prices, if you see, are changing. कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है. So from the graph it is clear that the maximum price is rupees 115. The maximum price, yes, with the help of pointer I am explaining you students, the maximum price is rupees 115, whereas the minimum price is rupees 80. The minimum price is rupees 80, and so the range will be, yes, 115 minus 80, we will get 35 rupees. Now it is obvious from the definition of a range that frequency does not play any role in determining the range. Yes, हमें ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे चाहिए होते हैं, हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं होता है. इवन फॉर द ग्रुप्ड डेटा, यस, मतलब क्लासेस वाला सम हो या XI वाला सम हो, हमारे को फ्रीक्वेंसी इसमें काम की नहीं होती है. For
for any grouped frequency distribution, the range can be obtained as a difference between the upper limit of the highest class interval and the lower limit of the lowest class interval. Again, when we will be doing the practical part, you will be able to understand it more clearly. Now, if we divide range of the data by sum xh plus xl, we get relative range. Now, yes, as I said, रेंज के अलावा एक और टॉपिक यहाँ पे इंक्लूडेड है जिसे रिलेटिव रेंज बोला गया है, एंड द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव रेंज इज रेंज डिवाइडेड by xh plus xl. Now r की जगह पे students we can also write the formula of it, that is xh minus xl, and yes, the denominator remains the same. Now important one liner over here is given to you, that the relative range is also known as coefficient of range. Mostly coefficient of range नाम use होता है. It is free from the unit of measurement, यानी कि जैसे क्वेश्चन अगर सेंटीमीटर्स मीटर्स में दिया हुआ हो, so over here yes, it is free from the unit of measurement. So if the coefficient of range for a population is small, then it can be said that variability is less in observations of the population. Now it says that if the coefficient of range for a population is small, यानी कि अगर इसका आंसर रिलेटिव रेंज का आंसर जो है अगर छोटा आता है, कम आता है, then it is said that variability जो है वो कम है. That is, the values of observations are not far from each other. इतना ज़्यादा difference नहीं है values. But if the coefficient of range is high, then it can be said that variability is more in the observations of the population. That is, the values of the observations are far from each other. Obviously, vice versa होगा. अगर coefficient of range ज़्यादा आता है, figures बड़े आते हैं, it means variability बहुत ज़्यादा है. Now, students, I move on to the calculation part of range and coefficient of range. Simple, हमारे को question इधर दिया हुआ है. If you see 161, 152, so on, it is given to you people. Now, arranging in order or not arranging in order is not a problem over here. But if you're not arranging in order, you need to search properly कि highest and lowest कौन सा है. So over here, our highest one, if we see, is 170, and the lowest one, if we check out, it is 150. So it is already written over here. Formula, you all know, xh minus xl, 170 minus 150. The answer is 20. The next is coefficient of range. Yes, formula we have already discussed. That is range divided by xh plus xl. So it is 20 that we have already got. And it is 170 plus 150. 20 by 320. You will get 0.0625. Very easy and simple topic we have today. Now, students, next I move on to, yes, same, range and coefficient of range. जब x का fi दिया हुआ, so it was very clearly defined कि यहाँ पे frequency कोई काम की होती नहीं है. यहाँ पे if you see the highest and the lowest one, हम observations में से ही लेंगे. The highest one 9, the lowest one is 3. So yes, 9 minus 3 is 6. Coefficient of range, very simple and easy. Yes, range divided by xh plus xl. 6 divided by 9 plus 3, so it is 6 by 12.5 is my आंसर. ये पूरा जो अभी अभी हमने थ्योरी में किया वैसा ही इधर भी दिया हुआ है आप लोगों को. नाउ नेक्स्ट टाइम मूव ऑन टू द अदर सम्स ऑफ क्लासेस. सम है, क्लासेस वाला सम है, सिंपल है, इजी है. नाउ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यूस वन. यस, वो तो हमको दिख ही रही है. द अपर लिमिट ऑफ द last class and the lower limit of the first class will be the highest and the lowest observation of the data respectively. In short, हमारा xh है 56 and xl है 44, and you all know how to calculate it, students. So obviously I won't discuss about it in
this again and again. एंड ये वाला सम जो है देख कर ही मालूम चलता है सेम क्लासेस वाला सम है, मगर यहाँ पे ये क्या है, यस दिस इज इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भी हो, टॉपिक में जो एक्सएच फाइंड आउट करने का तरीका था, एक्सेल फाइंड आउट करने का तरीका था, वो वही रहने वाला है, वोंट चेंज. सो एक्सएच 99, the highest one, the lowest one is 50, and the calculations will go on as I have already discussed with you people in the C class itself, students. Very simple and easy hai. It is 99 minus 50, 49. फिर उसके बाद coefficient of range आएगा 49 divided by 99 plus 50, 49 divided by 149, the answer is 0.3289, which is also equivalent to 0.33 students. Now, next time move on to the advantages and disadvantages of range. So, very first advantages, the range is very clearly defined. Yes, ये बहुत ही clearly, बहुत ही अच्छे से defined है. यहाँ पे आप लोगों को कोई फॉर्मूला में चेंज नहीं आता है कि क्लासेस हो तो अलग होगा या अनग्रुप्ड डेटा हो तो अलग होगा. नो, इट इज़ वेरी क्लियरली डिफाइंड. द सेकेंड वन इज इट्स कंप्यूटेशन इज सिंपल. यस, इसका कैलकुलेशन बहुत ही ईजी एंड बहुत ही सिंपल है. द थर्ड वन इज द रेंज इज यूजफुल मेजर स्पेशली when variability among the observation of the data is less. Now you all know what is meaning of the term variability. ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है जब वेरिएबिलिटी अमंग द ऑब्जर्वेशंस जो है वो कम होती है. नाउ द डिसएडवांटेजेस, ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑफ द डेटा आर नॉट इंक्लूडेड. येस, वी ऑल नो हाईएस्ट एंड लोएस्ट इंक्लूड होता है, सारे ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे इंक्लूड नहीं होते हैं. रेंज इज़ वेरी सेंसिटिव अबाउट सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस. येस, अगर सैम्पल चेंज हो जाएंगे ऑब्वियसली बात है द रेंज विल ऑटोमेटिकली चेंज. The third one is it is not suitable measure for algebraic operations. Yes, सारे observations include नहीं हो पाते, तो obvious ही बात है ये इतना ज़्यादा algebraic operations में use नहीं होता. The fourth one is it is cannot be calculated for frequency distribution having open-ended classes. You all know what is open-ended classes. I've already explained it to you. तो obvious ही बात है उसमें lowest और highest हम नहीं जान पाएंगे observations, and so वहाँ पे हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. नाउ नेक्स्ट टाइम मूव ऑन टू रेंज. नोट, अब ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है. रेंज इज़ यूजफुल इन स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कंट्रोल चार्ट्स विच मेजर द वेरिएबिलिटी विद इन द सैम्पल्स टेकन फ्रॉम द प्रोडक्शन. येस, यहाँ पे सैम्पल्स लिए जाते हैं. सैम्पल्स आर फॉर क्वालिटी कंट्रोल. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसमें हमेशा क्वालिटी चेक ओके लिखा हुआ होता है. इट मीन्स येस इट हैज़ बीन चेक्ड, क्वालिटी कंट्रोल उसका हुआ है, देखा गया है, चेक किया गया है. एंड यहाँ पे येस वी ऑल नो अगर वेरिएबिलिटी ज़्यादा आ जाएगी इट मीन्स इट इज़ अ प्रॉब्लम. सो वी नीड टू चेक the product once again. So yes, it is useful to quality control department. If variation is very large, then range is useful in measuring variations in money rates. Money rates में variation क्यों आया, कैसे आया, exchange rates का, share prices का, ये सब जानने में बहुत काम आता है. In our day-to-day problems like daily sales in a supermarket, temperature of a city, expense of petrol, by two-wheeler or a car, etc. are generally expressed in the form of intervals in which it lies. The range of the data can be known from it. Yes, temperature अगर देखा हो तो students अक्सर न्यूज़पेपर में हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर्स आते हैं, तो उससे हमको मालूम चलता है कि लगभग किस तरह का पूरे दिन में है ना हम लोगों को फील होगा. सो इट इज़ यूज्ड इन प्रैक्टिकल लाइफ ऑल्सो. बहुत सारी जगहों पे ओवर है द एग्जाम्पल्स आर गिवन टू यू एंड बहुत ही सिंपल एंड ईजी टॉपिक था. आई होप आई एम क्लियर टू यू विद द topic. So with this I am done, students. I'll continue. Yes, obviously chapter continue करना ही पड़ेगा.
in my next D class also. So yes, thank you.